ओके बच्चों, वन बाय वन मैं बुलाऊंगा। इस टॉपिक पे विकास तो पहले चेक करो ये क्या तरीका है। सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ इस तरह से जो भी शर्ट पहनते हो अगली क्लास से करोगे पनिशमेंट मिलेगा। जो जैसे बताया गया है जैसे पहनना है वैसे पहना टकल करके रखा करो और ये जो है ना अच्छे से पूरा अनफोल्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, now you can continue topic with your name and topic। नाम पहले स्टार्ट कीजिए उसका टॉपिक। Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. My name is Saurabh Kumar. Today I am here to give a information about OSI model. So first, OSI model stands for Open System Interconnection. It was given by, if you want to use this marker, it was given by ISO, International Standard Organization, which was established in 1947. It has given the ISO model in 1970s. OSI model. There are 7 layers in OSI model. The first layer is application layer. Yes, let me draw the figures of that 7 layers. भी करते जाओ। किसने स्टूडेंट 49 क्या करना है क्या? So these are the 7 layers. The first one is application layer. If we talk about application layer, then in which we are discussing the protocols like POP, SMTP, IMFP, which is responsible to transferring of data from one sender to receiver end. So here we can take SMTP, FTP, etc. Second one is presentation layer. So presentation layer is is the information that which is related to encryption. Encryption means that the changing of the information format multiple times in the form of ASCII code or indirect code, or we can say that it's in the form of GIF, JPG, and so on. And third is session layer. So session layer is about the response time or the open time. We can say that if we open a site, so there's a time limit of that site that we can if we have to make a payment of particular sites. If you can see in the sites of bank pay. SBI collects. I guess you have faced this problem nowadays because you all have filled the form of blockchain security. So this is a session layer because it's a give a time limit under which we have to proceed our process. The third one is the fourth one is transport layer. This layer is known as the heart of OSI model because this layer is responsible for transfer of data from one port number to other port number because this is known to only this layer because this layer is work as a mediator for this 3 layer and for this layer.
So fifth one is network layer. Network layer is the layer which is responsible for the networking. You can say that the routing. Routing, I guess you are aware with the routing, through which we are transferring the data from software level to physical level. The sixth one is data link layer. Data link layer is a layer which use bridge, or we can say that it's a switch to transfer the data from one node to another node. The last one is the physical layer. It is the most important layer because if it's not present in our OSI model, then none of the data can be transferred to any devices. So that's all. Okay, so next one. Yes, Ayush. Name and topic. I can explain mine. And I can choose the topic. Yes. If you can't, then you can use both also one day also. So, Good morning, everyone. My name is Ayush Kumar, and I am going to share some information about data communication. So, what is data communication? So, whenever we communicate means share some information to each other is called data communication. It can be of two types: remote communication and person-to-person communication. For example, now I am talking with you all. It is an example of person-to-person communication, local communication, and then there is remote communication. For example, if we text some messages to our friend who are sitting in their home, this is the example of remote communication. Now here comes the characteristics of communication. There are 4 characteristics of communication. First one is delivery. Second is accuracy. right topic here first. Yes. Next characteristics. Third one is timeliness. And fourth is jitter. Now, with delivery, I mean to say that data should be delivered to the desired location. So, means if I am talking to one of my friends, so in data communication, my message should be delivered to him and not somebody else. Now, here comes accuracy. Now, this means that if I am sending a message, so that exact message should be going to the receiver, and the data should not be changed during the transmission. Now, timeliness. For data communication, the time, there is a specific time to send the data. So in that given period of time, the data should be received by the receiver. And there the last one is jitter. Jitter is a negative property. It means that whenever we deliver audio or video, it travels in packets. So since it travels in packets, the time delay of delivering of the packet should be less. And now comes the components of data communication. Accessibility. Protocol.
Now, there are 5 components of data communication. First is message, means to communicate with each other, there should be message. So, and second one is sender. The device by which we are sending message is called sender, and in the same way, the device by which we receive message is called receiver. Fourth one is transmission medium, means transmission medium is the pathway to travel the data, to travel the data. And fifth is protocols. Protocols are the set of rules which governs the data communication. Now there's another topic in data communication is the data representation. So there are various forms of data. As you know, it can be a number, it can be text, it can be image, it can be audio or video. So different types of data are represented in different forms. For example, text and numbers are represented in the form of bits. Images are also represented in the form of bits, because as we know that images are formed with the help of pixels, and each pixels, the more the number of pixels, the more the quality of the image will be, and the more complex will be data communication. The more complex will be communication. In the case of image, each pixel is assigned a bit pattern to travel the data. And now audio and video. Audio and video are different from text, image, or numbers. It travels in the form of packets. As we know in the characteristic of data communication, jitter is also related to the delivery of audio and video. So are we talking data flow methods? Which is the other one? Yes, Sania. Good morning, friends. I'm Jivan standing in front of you all to deliver topic data flow. First, data flow. Data flow is the flow of data from sender to receiver, that is from a point to another point. And there are mainly 3 types of data flow. First is, you can draw a figure also. Figure is what simplex. Yes. So first type is simplex mode. In simplex mode, there is only one station from which it can only receive data, and the second station can only send the data. For example, like in keyboard. In keyboard, the keyboard used to only send the data to the keyboard acts as a sender, and it sends the data, and the monitor only receives the data. Second is half duplex. In half duplex, if there are 2 stations, if one is sending the data, then the second will only receive at the same time. But to send the data from the second station, it has to wait for the first to complete. In full duplex, the both can send and receive the data at the same time, like mobiles. Completed. Who is next? Who is next? Yes. Which topic? Prepare इसके बाद टॉपिक कौन सा है? टॉपिक
जा सकती है। जब हम दो या दो से अधिक नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करते हैं किसी रिसोर्स शेयरिंग के पर्पज से, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क मेनली तीन तरह के होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड WID, वाइड एरिया लोकल एरिया नेटवर्क की जब हम किसी भी एक एक्सप्लेन कीजिए, आप मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करो, लेंथ होता क्या है, लेंथ होता क्या है। एक्सप्लेन कीजिए क्या। लोकल एरिया नेटवर्क में हम किसी लोकल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जब हम किसी लोकल एरिया के नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि उसका रेंज होता है 0 से लेके 50 मीटर के अंदर में। इसका जो स्पीड होता है वो हाई होता है, और मैन का स्पीड जो होता है वो एवरेज होता है, इसका स्पीड होता है लो होता है। इसका स्पीड एवरेज इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, और मैन को हम लोग कलेक्शन ऑफ लैंड बोल सकते हैं, और मैन को कलेक्शन ऑफ लैंड। जो बहुत सारे लैंड के कनेक्शन को मैन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसे मैन नेटवर्क बोलते हैं, और जब लैंड और मैन दोनों के नेटवर्क को कनेक्ट करके मैन नेटवर्क। सबसे पहले कितना आपको Good morning, everyone. I am here to explain a topic, topology. Topology. Topology means connecting two or more devices to a link. There are several types of topology.
such as bus topology, mesh topology, star topology, and ring topology. First of all, I explain the bus topology. Bus topology is connected to a single link, and a single links, and that means a single wire. I have many nodes which is connected many devices, such as is a single link, and here one node, two node, three node, four node, five node, and several devices are connected in a single way. See, this single link also known as backbone of a system, all devices. If any devices are stopped, flow of network connection should be stopped. करेंगे क्या दिक्कत है, मैं बाद में करेक्ट करूंगा आपको. कंटिन्यू कीजिए. It is a point to point. It has a point to point connection. Second one is a star. A star topology is connected to a single device. It has a center, and center have many nodes and connected to many devices. It is a hub, and there are 4 devices connected. It is also a point to point topology. Third one is ring topology. In the ring topology, there is also a point to point connection. All devices are connected in a single. All devices are connected to a single wire. It has also a point to point connection. Fourth one is mesh topology. Fourth one is mesh topology. In a mesh topology, all devices are connected to each other in a point to point manner, in a point to point way. It is also so that it is all devices are connected to each other. In this connection, all devices are connected to each other, but all this system, all devices are not connected to each other. Yes. Just 1 minute. What is it? 46 सवाल नंबर थोड़ा सा आपको और प्रिपेयर करने की जरूरत है इसमें. पहली बात तो टोपोलॉजी होता है, ट्रोपोलॉजी नहीं होता है, तो करेक्ट करना. और दूसरी बात, बस टोपोलॉजी में जो है एक सिंगल वायर, बस टोपोलॉजी में सिंगल कनेक्शन होता है, सिंगल लिंक होता है जिससे कि सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं. तो आपको डिवाइस दिखाना होगा, ये सारे डिवाइसेस, ठीक है. और यदि उस लिंक में कोई लिंक कहीं से यदि ब्रेक हो जाता है तो सारा का सारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा. स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब या सेंट्रल सिस्टम होता है, मे बी एक कंप्यूटर और सर्वर हो सकता है, एंड फ्रॉम दैट सर्वर ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड by using point to point connection. Next is ring topology. So this is the type of ring. It means that the first device is connected to the second device, and second device is further connected to the third device, and the last one is connected to the first device. So this connection is called what? Ring topology. Clear? Mesh topology. ठीक है. थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करो, जानते हो लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. ठीक है. Yes, next. टॉपिक कौन सा है आपका? There are 2 parts of computer: software, hardware, and software.
Now, difference between hardware and software. हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर जो लॉजिकल होता है जिसे टच नहीं कर सकते. हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है. टच कर सकते हैं. और सॉफ्टवेयर You can see and touch also. एंड सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते. Logical part of the computer system, and the hardware is the physical part of the computer system. So physical means you can see, even you can touch also. Logical part is something that is you cannot not touch, only feel. You can feel that it is working. Software is just like a logical part. Yes, हार्डवेयर फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड, माउस एंड सॉफ्टवेयर जैसे कोई ऐप हो गया जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. yes, something. Type of software. There are 3 types of software. Application Write the name of all these 3. टॉपिक कौन सा आपने रिवाइज किया? ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक बताइए. मैं होल सिलेबस देता हूँ आप लोगों को. कहीं से भी आपको कोई टॉपिक है, आप रिवीजन सबको करके लाना है. मैं कोई भी टॉपिक दे सकता हूँ. हो गया. आपको कभी देखिए सारा टॉपिक बताइए. रिवीजन करके आते वो टॉपिक तो हो ही जाता है. सिंपल से आप पूरा करके आओ ना. आप सारे टॉपिक को करके आओ, क्योंकि आप कंप्लीट हो गया तो आपका सारा कंप्लीट टॉपिक होना चाहिए ना. प्रिपरेशन करके आइए और अच्छे से. यस कम. यस आपको ड्रेस मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला. फिर भी कोशिश कीजिए फॉरवर्ड करने का है. ठीक है. Then remove your mask. एक्सप्लेन कर दो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो उसके बाद एक्सप्लेन करते जाओ, राइट डाउन करते जाओ. Good morning, everyone. My name is Rohit Kumar. My topic is transmission media. We know all about data communication, and the transmission media is the pathway for the data to travel from one place to another, or we can say from one device to another device. It is of 2 types: guided or wired, and second type is unguided or wireless. Guided are 3 types, sorry. Coaxial, direction wire, optic fiber. Optical fiber, which is there.
कोएक्सियल वायर, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर। कोएक्सियल वायर उसमें भी दो टाइप का होता है, एक सिंगल बैंड होता है, एक डबल बैंड होता है। सिंगल बैंड में सिंगल बैंड और स्टिल अनसिल होता है ना इसमें। ट्विस्टेड पेयर दोनों में स्टिल होता है और अनसिल दोनों में होता है। आप उसका कीजिए कुछ, आप जो पढ़ते हैं कोएक्सियल में बेस बैंड होता है, ब्रॉड बैंड होता है। बेस बैंड और ट्विस्टेड पेयर में सिंगल बैंड शिल्डेड होता है, अनशिल्डेड होता है। शिल्डेड ये महंगा होता है और अनशिल्डेड लो कॉस्ट होता है। ये शिल्डेड फास्ट होता है अनशिल्डेड के कंपैरिजन में। और अनगाइडेड में कुछ वेव्स होते हैं जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इससे डेटा ट्रैवल करता है वायरलेसली। थैंक यू। well next yes नेटवर्क डिवाइस के बारे में हाँ बिल्कुल नेटवर्क डिवाइस भी पढ़ के आइएगा आप लोग, है ना। नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सब टॉपिक्स ऐसे मैंने जब भी पढ़ाया हूँ तो मैं ये सब चीजों को जरूर एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। बट फिर भी आपने आंसर्स को प्रिपेयर किया, ठीक है। रिपीटर क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। My name is Ronak Kumar Happy. My name is Ronak Kumar Happy. Today's topic is given by me. It's a network device. So very much here. नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग Devices. First, up. Second, स्विच, third one, bridge. रिपीटर, राउटर, है ना। Repeater. रिपीटर का स्पेलिंग गलत है। सब नेटवर्क से कनेक्ट होता है, सब वो केवल सही है, ये हटा दो, इसके नीचे वाले कंप्यूटर yes काम करता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब ये बात, ये सब नेटवर्किंग जब बनाओगे आप, इस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आप, है ना। मेनली गेटवे होता है, ठीक है। गेटवे अब एक डम डिवाइस है जो कि हमारे सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम के नोड्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये मैक एड्रेस ऑलरेडी मेंटेन कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है मेंटेन करने की। और ये मैक का एड्रेस मेंटेन करके इजीली
कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। ब्रिज हब से अपग्रेडेड वर्जन है। ये हब के दौरान में लगाया जाता था, जब ब्रिज एक हब है, 2-3 हब है और एक ब्रिज लगा के उसके पोर्ट्स को ब्रॉडकास्टिंग ना करने, यूनिकास्टिंग करने के लिए लगाया जाता था ब्रिज को। सर बहुत सारा हब है, उसमें ब्रिज को लगा के डिफरेंट नेटवर्क को हमें जब कनेक्ट करना होता है तो ब्रिज को लगा के connect करते हैं। और ये रिपीटर ब्रिज सिग्नल को रीजनरेट, मैंने कई बार बताया है, रिपीटर यूज किया है, किस टोपोलॉजी में यूज करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, पुश करने के लिए। राउटर ये राउटिंग का हमारा पाथ डिसाइड करता है कि हमारा डेटा किस पाथ से जाएगा, कौन शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके हिसाब से। सेल टावर गेटवे, जहाँ से हमारा अच्छा गेटवे कहाँ यूज करते हैं बताओ? आपने पेमेंट गेटवे का नाम सुना है? तो जब भी क्या होता है ना, कुछ ट्रांजेक्शन आप करते हो और वो एक नेटवर्क में होता है, वो भी दोनों अलग अलग नेटवर्क है। मान लो सिंपल सी बात, आपने वेबसाइट पर बनाया, आपका अपना नेटवर्क होगा, और या फिर अब जब ट्रांजेक्शन करते हो, बेसिक आपका बैंक मान लो SBI और आप BOB में या किसी बैंक में भेज रहे हो, इसका अपना नेटवर्क है, उसका अपना नेटवर्क है, और दोनों अलग नेटवर्क है, और उस दोनों के बीच में आप क्या करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। तो उस केस में थर्ड पार्टी जो है आपके बीच में आता है, उसको हम कहते हैं पेमेंट गेटवे या गेटवे कहते हैं। तो वही चीज दो डिसिमिलर नेटवर्क को जो जोड़ने का काम करता है, ऐसे कह सकते हो, वो क्या है आपको, उसके बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है? क्लियर है सर गेटवे डिवाइस भी है, सब में मिलता है आपको, है ना? यस, क्या चाहिए? देखिए सब टाइप है उसका, जैसे कार्ड का टाइप है, जैसे कुछ में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कुछ कार्ड ऐसे हैं जो सब जगह चल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड जगह पे चल सकते हैं, उसके हिसाब से उसको बांटा गया। नहीं, पेमेंट गेटवे अलग हुआ, जो आप पेमेंट करते हो, तो आप कभी ऑनलाइन पेमेंट करते होगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है CC एवेन्यू के नाम से लिखा होगा आपने, है ना? HDFC का जो पेटीएम का पेमेंट गेटवे भी होता है, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे है जो कि आपके एक नेटवर्क से डेटा को लेता है, रुपया लेगा, कलेक्ट करके दूसरे नेटवर्क को भेजता है। तो आजकल पहले क्या होता, 2 दिन ये समय लगता था, आजकल का जो पेमेंट गेटवे होता है वो तुरंत ट्रांजेक्शन में। तो बेसिकली दो नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क के बीच में वो काम करता है पेमेंट गेटवे का, ठीक है? अब कोई यहाँ से अलग, जैसे अलग दुनिया से कोई आ रहा है और इस दुनिया में, उसके बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करता है, ठीक है? यस, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, है ना? टाइप ऑफ नेटवर्क पे आप लोग रिवाइज करके आओगे, बाकी टॉपिक भी रिवाइज करके आओगे, होल सिलेबस से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है? मैं रैंडम किसी को भी बुलाऊंगा, किसी को भी रैंडम एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक, ठीक है?